much for giving us this opportunity to read Shivpuran as well as listen to it. We are reading Rudra Samhita part 2 of Shivpuran. Last week we read 2 chapters, that was 18 and 19, and we read how Kama started spreading the enchanting power of spring all around, and all what he was trying to do was, arouse the feeling of love in Shiva. He tried, there was fragrance in the atmosphere, there was feelings of love everywhere, immortal or immortal were feeling it. Shiva was in his deep meditation though. So Kama tried every possible trick, every possible magical trick on Shiva, but could not find even a single vulnerable loophole where he could enter his mind. When Parvati arrived, Shiva did open his eyes, and he couldn't stop himself from appreciating the beauty Parvati behold. But he got very suspicious seeing the early arrival of spring and the feeling of love everywhere. And when he looked around, he found Kama with his wife Rati on his left side and ready to shoot an arrow of flowers of love towards him. And yes, the senseless Kama did shoot the arrow upon seeing that, which did hit Shiva, but it was a failure. But Shiva became really, really angry, and he became so angry because he saw himself, who is the supreme lord of self-control, getting detached. So he got so angry that the blazing fire started coming out of his third eye, and it vanishes the Kama. It just burned him to ashes. Seeing that, Rati was very devastated. She felt unconscious, and all the gods came and requested Shiva to resuscitate him. They told him that his intentions were not bad. Shiva listened to them, and he told everyone that Kama would be born as Pradyumna, as son of Krishna, who would be an incarnation of Sri Vishnu, and Krishna will beget Kama in Rukmani. Yes, and Kama would be reborn as Pradyumna, and he would go back to Dwaraka, that's his city, upon killing the demon Sambara. And that is when Rati will find her husband, and then they will live happily thereafter. So this is where we read last week. Let's proceed from here. Today we would be reading 2 chapters again, chapter 20 and 21. Today our English reader is Nathant uncle, and Hindi reader is Ashwani uncle. Nathant is our first youngest volunteer, so I would request to forgive for any mistakes. Just bear with him. Nathant. Jai Guruji, Shukrana Maharaj. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Today I will be reading chapters 20 and 21. The story of the submarine fire. Narada said, "O Brahma, please tell me, where did the flame of the fire emerging from the eye of Shiva go? Please tell me also the further story of the moon-crested Lord." Brahma said, "When the fire from the third eye of Shiva reduced Kama to ashes, it began to blaze all around without burning anything. A huge hue and cry raised in the 3 worlds, consisting of mobile and immobile creatures. Immediately the gods and sages sought refuge in me. All of them in their agitation bowed and eulogized me with their palms joined in reverence and heads bent down. They intimated to me their grief. On hearing that, I pondered over the reason for the same, and remembering Shiva humbly, I went there in order to protect the 3 worlds. That fire, out to burn everything, very brilliant with its shooting flames, was thwarted by me, as I had the capacity by Shiva's grace. O sage, then I made the fiery fury, out to burn the 3 worlds, tender in its blaze and mare-like in shape. Taking the fire mare-like in form, at the will of Shiva, I, the Lord of the worlds, went to the seashore for the benefit of the worlds. O sage, on seeing me arrive there, the sea took a human form and approached me with palms joined in reverence.
Bowing and duly eulogizing me, the grandfather of the world, the ocean said lovingly. The ocean said, "O Brahma, the lord of all, why have you come here? Please command me with the pleasure knowing me to be your servant." On hearing the words of the ocean, I remembered Shiva. I spoke with love in order to benefit the world. Brahma said, "O dear, intelligent one, causing the welfare of all the worlds, O ocean, induced by Shiva's will, I shall explain to you. This is the fire of fury of Lord Shiva, the great Lord. It is in the form of a mare now, after burning Kama, and it was about to burn everything. At the will of Shiva, I was requested by gods who were harassed by it. So I went there and suppressed the fire. I gave it the form of a mare. I brought it here. O ocean, I ask you to be merciful. The fury of Lord Shiva, now in the form of a mare. You will bear till the final dissolution of all living beings. O Lord of rivers, when I shall come and stay here, you shall release it. This is Shiva's wonderful fire of fury. His perpetual diet shall consist of waters that shall be preserved by you with effort lest it should go down. Thus, requested by me, the ocean agreed. None else could have grasped Shiva's fire of fury thus. That fire in the form of a mare entered the ocean and began to consume the currents of water. It blazed with all its shooting flame. O sage, then delighted in mind, I returned to my abode. The ocean is divine. Divine form bowed to me and vanished. O great sage, the entire universe, freed from the fear of that fire, became normal. The gods and sages became happy. Chapter 21. Narada instructs Parvati. Narada said, "O dear Brahma, O disciple of Vishnu, O great intellect, O creator of the three worlds, this is a very wonderful story of the great soul Shiva that has been narrated. When Kama had been reduced to ashes by the fire from the third eye of Shiva, and when the fire had been deposited in the ocean, what happened thereafter? What did goddess Parvati, the daughter of the Lord of mountains, do? O storehouse of mercy, please tell me now where she went along with her maids." Brahma said, "O dear, O great intellect, listen to the story of the moon-crested Lord. My master and the cause of the great enjoyment and protection. A wonderfully loud sound arose, covering the whole firmament, while the fire issuing from Shiva's eye burnt Kama. On hearing the loud report and seeing Kama burnt, Parvati was terribly frightened and returned to her abode along with her maids. Himavant, along with his attendants and relatives, was surprised on hearing the loud report. He was agitated on remembering that his daughter had gone there. On seeing his daughter excessively agitated, the Lord of the Mountains was sorry. The Lord of the Mountains approached her gently as she was crying due to her separation from Shiva. Approaching her and wiping off her eyes with his hand, he said, "Dear daughter, do not be afraid. Do not cry." He took her on her lap and consoled her. The Lord of the Mountains took her immediately to his palace. When Shiva had vanished after burning Kama, Parvati became extremely agitated due to his separation. She did not attain pleasure anywhere. Returning to her father's abode and meeting her mother, Shiva, the daughter of the mountains, considered herself born again. She cursed her own beauty. She said to herself, "Oh, I am doomed." The daughter of the Lord of Mountains did not regain composure, though consoled and assuaged by the maids. She did not achieve happiness and peace in sleeping, drinking, bathing, or sitting amidst her maids. Remembering the various gestures and movements of Shiva, she muttered to herself ever and anon, "Fie upon my beauty, fie upon my birth and activity." Thus Parvati was such distress in mind due to separation from Shiva. She did not at all feel happy. She always muttered, "Shiva, Shiva." Oh dear, with her consciousness centered round the Pinaka-bearing Lord.
She continued to stay in the palace of her father. Shiva bewailed much and fainted frequently. The lord of the mountains, Menaka, and their sons, chief of whom Menaka of undistributed mind, tried to console her, but she still did not forget Shiva. O celestial sage, O intelligent one, employed by Indra, the slayer of Bala, you came to the Himalaya mountain, roaming here and there as you pleased. You were the you were then worshipped by noble-souled mountain. You inquired of his health and happiness, and you were seated in a noble seat. Then the lord of the mountain told you the story of his daughter, from her service to Shiva, the burning of Kama by him. O sage, on hearing that, you told the lord of the mountain, worship Shiva. You stood up, remembered Shiva mentally, and took leave of him. O sage, leaving him, you hastened to meet Parvati secretly. You, a favorite of Shiva, perfectly wise and engaged in helping the world, approaching Parvati and addressing her, you spoke to her respectfully. You are foremost among the wise, and you were interested in her welfare. Your words were true. Narada said, O Parvati, listen, I am sympathetic to you. I shall speak truly. My words will be beneficial to you in all respects. They will lead to the achievement of your desire. They are free from aberrations. The great God has been served by you without austerities. You had some pride which he, the blesser of distress, eradicated. O Shiva, after burning Kama, Lord Shiva, though favorably disposed of his devotees, left you, since Lord is a great yogin and so unattached to you. Hence, you shall propitiate him by performing a great penance. Shiva will take you as his wife, after you have sanctified by austerities. You will never forsake the auspicious Shiva. O God, O Goddess, you will not take any other than Shiva as your husband. Brahma said, on hearing your words, O sage Parvati, the daughter of the mountain, heaved a sigh of relief, gladly spoke to you with the palms joined in reverence. Parvati said, O sage, O omniscient one, you help all the worlds. Please tell me a formula for the propitiation of Lord Shiva. No sacred rite will ever fructify without a good preceptor. Truly, this eternal statement of Vedas was heard by me before. Brahma said, on hearing these words of Parvati, O excellent sage, you taught her the 5-syllable mantra of Shiva in accordance with the sacred law. O sage, generating her faith, you told her the supreme efficiency of the great formula thus. Narada said, O goddess, listen to the efficacy of the formula, hearing which Shiva becomes excessively pleased. This formula is king of all formulas. It yields all cherished desires, bestows all worldly pleasures and salvation, and appeals much to Shiva. Repeating the formula in accordance with injunctions, you shall propitiate Shiva. He will certainly appear before you. O Shiva, meditate on his form, observing all restraints. Repeat the 5-syllable mantra. Shiva will be pleased quickly. O chaste lady, perform the penance thus. Lord Shiva can be attained through penance. Everyone attains the desired fruit in penance and not otherwise. Brahma said, O Narada, after saying thus in Parvati, you, the favorite of Shiva, went to heaven, a casual visitor engaged in the welfare of the gods. O Narada, on hearing your words and securing the excellent 5-syllable mantra, Parvati was extremely pleased. And that's the end of chapter 21. Namaskar. 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 Namaskar.
जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना for another opportunity. Great reading by our youngest reader. So, ब्रह्मा जी का शिव की क्रोधाग्नि को वडवा नल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित हो सब और फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर मस्तक झुका दोनों हाथ जोड़ मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वह दुख निवेदन किया। वह सुनकर मैं भगवान शिव का स्मरण करके उसके हेतु का भली भांति विचार कर तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वह अग्नि ज्वालामालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी की दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोधमय अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणत कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से इस वाड़व शरीर घोड़े वाली अग्नि को लेकर मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने, मुझे आया देख समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोगों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्राह्मण, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करके लोकहित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नतापूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोगों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे कह रहा हूं, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर मैं यहाँ आया। जलाधर, मैं जगत पर दया करके तुम्हें यह आदेश दे रहा हूं, इस महेश्वर के क्रोध का जो वाड़व का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरितपते, जब मैं यहाँ आकर वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर ना चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरा ऐसे कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोधाग्निक रूप वडवान नल को धारण करना स्वीकार कर लिया, जो दूसरे के लिए असंभव था। तदंतर वह वडवाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जलराशि का दहन करने लगी। मुने, इससे संतुष्ट होकर मैं अपने लोक को चला आया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुने, रुद्र की उस क्रोधाग्नि के भय से छूटकर संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे, मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी का क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गईं? यह सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया, तब वहां महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गईं। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभु के विरह से रो रही थी।
अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल हुई देख शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ। वे शीघ्र ही उसके पास जा पहुंचे। वे फिर हाथ से अपनी दोनों आंखें पोंछकर बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए वे अपने घर ले आए। कामदेव का दहा करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थीं। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जाप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोक मगन हो बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चेता थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल ना सकी। बुद्धिमान देवऋषि, तदनंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदनंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, यह सब कुछ बताया। मुने, यह सब सुनकर तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को घोड़ छोड़ शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। मुने, तुम लोक उपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आ उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी, तुमने कहा, कालिके, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूं। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहां महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्भयुक्त होकर ही की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर जो तुम्हें साकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव अपने आप सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा तुम दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार ना करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उल्लसित हो तुमसे हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभो, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुने, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर तुमने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे,
शोच संतोषादि नियमों से तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साध्वी, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छानुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपर्युक्त बात कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुनकर उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई।